नायरा बहन गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। रिंकू भैया थैंक यू। रिंकू भैया लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। ले जू है जोन बाहू कौन ले जाओ जोन तक था बहू ले जा। राधे राधे, थैंक यू। 4 लाइक हो गए। सारी रात में आपने लगाया हूँ। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। आए थे तो मुझे पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आने के लिए। हाँ भैया समझ सकती हूँ, काम बढ़ सकता है क्योंकि काम भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना ना रिंकू भैया। हाँ हाँ, म्यूट करके रख दिया करो ना भैया। घर पे जब आया करो म्यूट करके रख दिया करो तो हम सब लोग सपोर्ट कर दिया करें। अभी नहीं, अभी दूध नहीं निकाले हूँ। नायरा बहन आए, तुम कहा म्यूट हटा के बोल दे, नहीं तो लगेगा दीदी देख नहीं रही हैं। और आपका तो पता था कि आप लाइव में लगाए हो। एक बार शाम की लाइव बंद कर दी, गोल गोल करने लगा था 12 बजे तक, तो बंद करके कुछ टाइम थोड़ा मोबाइल बहुत गर्म हो गई थी, कपड़ा गीला करके रात में उठ उठ के ना, जैसे बुखार हुआ रहे पट्टी गर्म हो जाए वैसे कपड़ा हो रहा है मोबाइल। अभी भैया अब नहा लिए हैं तो रात छोटी होती है ना, तब नहा के पूजा वूजा कर लेते हैं तो 6:30 बजे निकालेंगे गाय का दूध। शाम को दूध निकालते निकालते 7 बज जाता है, 6:30 6:45। तो सुबह इतने 2 ही टाइम तो बहुत जूनी हो गई गाय ना, मैं लगा रही हैं। गाय मैं ही लगाऊंगी, वो मतलब 16-17 महीने, 16-17 महीने उसको हो गया बच्चा किए। इसलिए लेट से लगाने लगी हूँ।
मई बीत गया, 17वां महीने बीत गया, 18वां महीने लग गया उसका। बच्चा किए और चौथा 5वां है, उसके पेट में बच्चा भी है, 5वां महीने लगा हुआ। आपको दूध निकालना हो तो निकाल लो भैया, अभी 6 बजे बंद कर देंगे रिंकू भैया। अब नायरा बहन आएंगे, थोड़ा टाइम सपोर्ट कर लें। आपको काम हो तो आप काम कर लो। हाँ भैया आप जाइए, आप अपना काम कर लीजिए, 6 बजे हम बंद कर देंगे। थोड़ा टाइम मोबाइल को रिलैक्स होना चाहिए, नहीं तो फिर 8 बजे चलाना है। अभी नायरा बहनी 6 बजे चले हैं, इनका भी सपोर्ट है, सुनीता बहन का सपोर्ट है। एक घंटा मोबाइल ये थोड़ा सा आराम कर लेगी ना तो ठीक रहेगा। नायरा बहन दोनों आईडी से लाइक कर दो सिस्टर। बहुत जल्दी कल आपने लाइव बंद कर दिया। मैं आपको बोल के गई कि भोजन दे के आ रही हूँ, कमेंट ही करने जा रही थी, और 8:50 पे आपको देख रही हूँ तो लाइव बंद। और रात में जब फिर चलाई तो मेरी लाइव चल रही थी। नायरा बहनी आप तो ऑटो चलाती हो, तब काहे हाथ से परेशान हो रही हो? ऑटो लगा दो। मैं तो लगाना ही भूल गई हूँ, तभी तो मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही, नहीं लगा लगा के छोड़ देती, आराम से सपोर्ट होता रहता सबका। ओ अपडेट ही करना भूल गई, कैसे अपडेट किया जाता है और सेटिंग करना सब आता है।
एक अक्षर वाला सेटिंग करना आता है, और जैसे आप बड़े बड़े कमेंट वाला भी वो सेटिंग करना आता है। टाइमर भी सेट कर लेते हैं, कितना घंटा देना है, कितना सेकंड वाला, ये सब कुछ आता है। खाली उसको अपडेट ही नहीं कर पाती हूँ। कितना जन को सिखाई ऑटो क्लिकर लगाना, और हम ही लगाना भूल गए हैं। देखते रहो, मेरी बहन का चैनल मोनो हो गया ना, अब बराबर कंपटीशन करती हैं। नहीं जाऊंगी तो नहीं आती हैं। और जो कि मैं बराबर नहीं देखती इनकी लाइव में, कभी भी नहीं देखी। इनका चैनल मोनो हो गया, 8-8 9-9 घंटा 10-10 घंटा, जैसे मेरे पास 3-3 तब 3-3 4-4 मोबाइल भी थी जब इनका चैनल मोनो नहीं हुआ था। अभी डॉलर बन रहा तब भी था। अब क्या बोले, 3-4 आईडी लगा के उनका ऐड देखने का, जो साथ लेके चलना ही नहीं है, क्या मतलब है। हम अपने के लिए अपना प्रत्याग कर देते हैं, लेकिन हमारे अपने जो है ना, अपने स्वार्थ से खाली लटके हुए हैं हमारे साथ। ये भी दया नहीं आती कि उनकी लाइफ में ज़्यादा कोई आ भी नहीं रहा है, उसका ज़्यादा वाच टाइम बाकी भी नहीं होगा, तो कम से कम रहती है मोबाइल ये खाली रहती हैं वही ऑन करके लगा दूँ, कभी नहीं लगाती हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी है तो क्या। समय सब देखता है ना आरा बहन, कोई बिना समय देखे किसी को सपोर्ट नहीं करता। 2 आईडी लगाती हूँ, 2 आईडी लगाती हैं, 2 घंटा देती हूँ, 2 घंटा देती हैं, आधा घंटा देती हूँ तो आधा घंटा, इतना ही समय दे के जाती हैं। मैं उनका पूरा बराबर बराबर देखती हूँ। संडे से नहीं गई, संडे को नहीं आई, चली गई थी मंदिर, फिर मैं नहीं गई उनकी लाइफ में, फिर नहीं आई वो। देख तो रही हो ना।
क्या हुआ? किसी को ज़्यादा करोगी तो कोई नहीं बोलेगा। अपने लोग तो बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, संडे को मंदिर गई थी मैं, संडे को मैं उनकी लाइफ में सपोर्ट करके आई, दोनों तीनों आईडी से अपने। उस दिन मैं जब रो रही थी तब से देखो मेरी लाइफ में नहीं आई हैं। और क्या, रिंकू भैया हमारा बहुत सपोर्ट किए हैं, समझ लो। कल सुने कि मेरा इतना वॉच टाइम बाकी है, भैया ने आज रात में 12 बजे के बाद से ही लगाए हैं एक आईडी का। सुनीता बहन हो गई, रिंकू भैया, विनोद भैया, अभी बिंदु दीदी परसों रात में 4-5 घंटा दे के गई, जो कि 4-5 घंटा में वही तो सब वही तो बोल रही हूँ। मैं सोचती थी कि जाने दो, मेरी बड़ी बहन है, चैनल चला रही हैं, तो इनका भी भाई जल्दी जल्दी वॉच टाइम हो जाएगा, डॉलर बन जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, अच्छा रहेगा। इनको भी मेरा तो सोचना चाहिए नायरा बहन ना, कि मेरी सिस्टर इतना परेशान हो रही है। आज मैं सबको संभालते संभालते अपना बिगाड़ दे रही हूँ ना, लेकिन अब नहीं संभालेंगे, यही सोच लिए हैं, भाड़ में जाए। थोड़े से मेरा काम थोड़ी निकलने वाला है, अब जो शुरू किया उसको तो बाकी बिहारी कृपा करेंगे पूरा ही होगा। और बाकी बिहारी सब कृपा बना रहे, जो ठानती हूँ मैं वो करके दिखाती हूँ।
इतना बार बोली तीनों आईडी दीदी लगा दिया करो, जीजा वाली बच्चों लोग की रहती है, मैं तीनों घंटा का लगाओगी तब भी 4 आईडी 10 4 5 7 घंटा मुझे मिल जाएगी। इतना हैरान हूँ, सुन नहीं रही हैं, सब सुनते हैं, लाइबियाँ गुजर के जाती हैं, सुनने के लिए बोल भी रही हूँ। तुम्हें गुस्सा आता है तो हम भी इंसान ही, हमको गुस्सा नहीं आता क्या? हमको भी गुस्सा आता है, अपने आप पे आता है। सबके लिए मैं अपने परिवार से लड़ जाती हूँ। नायरा बहन 6 बजे बाय बाय कर देना सिस्टर, थोड़ा मोबाइल बंद कर दूँ, आराम मिल जाएगी ना, 7 बजे आपकी लाइफ में लगाना रहेगा। हाँ बहन, जितना टाइम दी हो उतना अपना याद, अभी हम आके टाइम देंगे जो अपना समझना, फिर 8 बजे की लाइफ में आ जाना। अब बाय बाय कर दो बहन, बंद कर दूँगी। घर रहती है ना तो बराबर चार्ज भी नहीं हो पाती नायरा बहन।